बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करियर कोचिंग सेंटर में होने वाले प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस 2022 में जो सेकेंड ईयर इंग्लिश का पेपर था साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, उसके एमसीक्यूज को। तो जिन्होंने इसे अटेम्प्ट किया था उन्हें की मिलेगी, और जिन्होंने इसे अटेम्प्ट नहीं किया उन्हें प्रैक्टिस और प्रिपरेशन मटेरियल मिलेगा। और ये वीडियो सिर्फ साइंस ग्रुप के लिए नहीं बल्कि कॉमर्स, आर्ट्स, होम इकोनॉमिक्स सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सबने देखना है और एंड तक देखना है, क्योंकि इसके अंदर हम 40 के 40 एमसीक्यूज को आंसर करने लगे हैं। पहला एमसीक्यू है, रुडोल्फ रसेंडल ओरिजिनली वाज ए और एन फ्रेंच, बेल्जियन, English, Britannian. The Seven Ages of Man has been taken from Shakespeare's drama As You Like It, Act 2, Scene 5, Act 2, Scene 7, Act 3, Scene 5, none. The one who was imprisoned in the castle of Zenda was Rasundel, Colonel Sapp, Alsberg, none. Which figure of his speech is employed chiefly in The Devoted Friend? Hyperbole, metonymy, personification, paradox. आपने करना यह है कि आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को लिख लेना है, और उसके बाद आपने वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लेना है। सो हियर आर द आंसर्स। रुडोल्फ रसेंडल ओरिजिनली वाज इंग्लिश, ए और एन नहीं आना चाहिए था, सॉरी फॉर दिस। द सेवन एजेस ऑफ मैन हैज बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स ड्रामा एज यू लाइक इट, एक्ट 2 सीन 7। The one who was imprisoned in the castle of Zenda was Alsberg. Which figure of his speech is employed chiefly in The Devoted Friend? That is personification. He likes and prefers democracy in political system. ये is political system नहीं है, in political system है। लियाकत अली खान, Einstein, James Serber, none. He is known as the poet of nature, P.B. Shelley, John Keats, Wordsworth, none. Complete the verse if Hopeward's dupes, fears may be, rumors, false, liars, ignorance. According to Shelley, music when so voices die vibrates in the air, heart, air, memory. According to Shakespeare, life is a drama and this world is examination hall, stage, test, place, none. 20 minutes with Mrs. Cantab is or an revenge drama, melodrama, emotional drama, detective drama. आप अपनी वीडियो को पॉज करें, आंसर्स लिख लें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। So here are the right answers. He likes and prefers democracy in political system, Einstein. He is known as the poet of nature, Wordsworth. Complete the verse, if hopes were dupes, fears may be liars. According to Shelley, music when so voices die vibrates in the memory. According to Shakespeare, life is a drama and this world is like a stage. 20 minutes with Mrs. Kentub is a melodrama. अगर आप चाहते हैं कि सेकेंड ईयर की जितनी भी पोएम्स हैं उसके तमाम तरह एमसीक्यूज को along with the solution of past papers आप सुन सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो आपकी स्क्रीन के जो टॉप राइट पे आई बटन आ रहा है उस पे प्लेलिस्ट मौजूद है तमाम तरह पोएम्स के एमसीक्यूज और पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशन की। उसे क्लिक करके आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। Each stanza of the Man of Life Upright is of 4 lines, 5 syllable, 6 syllable, 4 syllable, none. Samson is originally a Hebrew word and it means tiger, eagle, son, warrior. He was the father of Samson, John, Matthew, Manoah, not mentioned. Monotheist means believer of only God, believer of one God, believer in many gods. The duration of coronation was 2 hours, 3 hours, an hour, 90 minutes. The age of Rudolph Rosendal was 30 years, 29 years, 32 years, none. वीडियो को पॉज कर लें, अपने आंसर्स को लिख लें एक जगह पे, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here are the correct answers. Each stanza of a Man of Life Upright is of 4 lines and 6 syllables. Samson is originally a Hebrew word and it means son. He was the father of Samson, Manoah. Monotheist means believer of one God. The duration of coronation was an hour. The age of Rudolph Rosendal was 29 years.
अगर आप चाहते हैं कि प्रोज सेक्शन के तमाम तर चैप्टर्स और प्लेस के आप MCQs along with the past papers solve कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, सुन सकें, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन शो हो रहा है उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. Say I am Christian or say I am jealous. It was spoken by Princess Flavia, Moba, Countess Alga, Rupert. The wife of Samson was Delilah, Catherine, Mary, Nan, who was Belgian in the following characters: Croston, Lengram, Dechard, Barcelin. Mrs. O'Cantor was driving fast in a built-up area at the speed of 50 km, 50 miles, 70 miles, Nan. What was the relationship between John and Maxwell? Cousins, brothers, colleagues, brother-in-law. Heaven does not always make the right man kings. It was spoken by Sapt, Fritz, Ressendel, Alsberg. The deadly enemies of Samson Agonistes were Philistines, Palestine, Mongols, Romans. आप पॉज करके देख सकते थे इसकी वीडियो को. आपके सामने जो करेक्ट आंसर्स है वो आ चुके हैं. Sam Christian or Sam jealous, it was spoken by Moba. The wife of Samson was Delilah, who was Belgian in the following characters: Barcelin. Mrs. O'Cantor was driving fast in a built-up area at the speed of 50 miles an hour. What was the relationship between John and Maxwell's brothers? Heaven does not always make the right man kings. It was spoken by Fritz. अच्छा, बहुत सारे लोग इस वाले डायलॉग को एसोसिएट करते हैं सैप के साथ. सैप did not say this. It was Fritz who said this line. The deadly enemies of Samson Agonistes were Philistines. अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेकेंड ईयर का जो नॉवेल है द प्रिजनर ऑफ जेंडा उसकी कंप्लीट इजी एंड चैप्टर वाइज समरी सुन सकें, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन आ रहा है उसे क्लिक करके आप उसे सुन सकते हैं. Oscar Wilde was Irish, Scottish, English, American. According to Einstein, each of us is here for a brief life, stay, sojourn, duration. Feast is used in Samson Agonistes and it means celebration, meal, joy, dinner. John Milton and Samson both were powerful warriors, blind, prisoners, pioneers. Pakistan and the Modern World is a speech delivered by Liaquat Ali Khan at Harvard University, Oxford University, Kansas University, None. आप अपनी वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद अपनी आंसर्स को लिख लें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the correct answers. Oscar Wilde was Irish. According to Einstein, each of us is here for a brief sojourn. Feast is used in Samson Agonistes and it means celebration. John Milton and Samson both were blind. Pakistan and the Modern World is a speech delivered by Liaquat Ali Khan at Kansas University. The Brooklyn Dam rumor occurred on 30th March 1913, 12th March 1913, 13th March 1914, none. The West lost its position through the wars between Romans and Turks, French, Germans, Russians. The duration of Tang dynasty was between 600 to 900 AD, 618 and 907 AD, 620 and 914 AD, not mentioned. Albert Einstein was awarded the Nobel Prize. It's not a Nobel, it's Nobel. गलत लिखा हुआ है. Nobel Prize in 1920, 1921, 1919, none. The dam has now broken, thus setting an official seal of authentication on the disaster, terror, disease, calamity. Force always attracts men of low morality. देखते हैं इसके करेक्ट आंसर्स क्या है, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को लिख लेना है. उसके बाद इस पॉज करके अपने आंसर्स को लिख लेना है और फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लेना है कि कितने सही और कितने गलत हुए. पहले क्या है, the Brooklyn Dam rumor occurred on 12th March 1913. The West lost its position through the wars between Romans and Germans. The duration of Tang dynasty was 1618 to 907 AD. Albert Einstein was awarded the Nobel Prize in 1921. The dam has now broken, thus setting an official seal of an authentication on the calamity.
For force always attracts men of low morality. अगर आप ये चाहते हैं कि आप देख सकें कि पेपर को कैसे डील करना है, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है, किस तरह से ज्यादा नंबर आप हासिल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, तो उस वीडियो के लिए आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन आ रहा है उसे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. Britannia is an imaginary country located in the south of Europe, east of Europe, west of Europe, central Europe. The solitary reaper was singing in French language, Scottish language, Gaelic language, none. Freedom is a fruit that must be earned before it can be celebrated, enjoyed, observed, none. The Prisoner of Zenda was written in 1893, 1894, 1890, none. The language of Britannia was English, German, Britannian, French. Mastodons is mentioned in Reflections on the Reawakening East, and they were a prehistoric animal similar to elephant, tiger, dinosaur, zebra. इन MCQs में बहुत सारी मिस्टेक्स ही, गालिबन टाइपिंग मिस्टेक्स ही होंगी. बहुत सारों को मैंने करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं कहीं पे मिस्टेक्स रह गई हैं. सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. लेकिन आफ्टर ऑल ये प्रैक्टिस मटेरियल आपको हेल्प आउट जरूर करेगा. इसके करेक्ट आंसर्स देखते हैं. Britannia is an imaginary country located in the Central Europe. The solitary reaper was singing in Gaelic language. Freedom is a fruit that must be earned before it can be enjoyed. The Prisoner of Zenda was written in 1893. The language of Britannia was German. Mastodons is mentioned in the Reflection on the Reawakening East, prehistoric animals similar to elephant. This is it. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. लेकिन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है. आपके कमेंट्स को वैल्यू किया जाता है. चैनल को देखते रहें, वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज.